Let us read the text first, then we will translate the text. My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. This I was very glad to do. I continued working on this vessel for a number of days. After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton. In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk. When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. The first sight of the large three-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seemed to give me new life. As soon as possible, after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. Having been so long without proper food, a bath, and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. For some time, he did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor. I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my earthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they, if I could only get a chance to show what was in me. After some hours had passed, the head teacher said to me, "The adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it." रीडिंग हो जाने के बाद अब हम इसका तर्जमा करते हैं. My work pleased the captain so well. Please माने खुश करना. The captain so well, very well यानी बहुत ज़्यादा. That he told me I could continue working means लगातार काम करना. To continue working लगातार काम करना for a small amount per day. Per day means every day. My work pleased, मेरे काम ने खुश कर दिया था. The कप्तान को so well बहुत ज़्यादा. That he told me कि उसने मुझसे कहा I could continue working कि मैं लगातार काम कर सकता हूँ for a small amount per day. हर एक दिन चंद समय के लिए. This I was very glad to do. This I was very glad to do. और यही चीज़ करके मुझे बहुत खुशी हुई. I continued working on the vessel. मैं लगातार काम करता रहा on this vessel, उस जहाज़ में for a number of days, कई दिनों तक. For a number of days, कई दिनों तक. After buying food with my small wages माने होता उजरत. अपने छोटे उजरत के ज़रिया से खाना खरीदने के बाद there was not much left. Leave ये left ये third form of verb है. There was not much left ज़्यादा नहीं बचा था to pay
माई वे टू हैम्पटन। हैम्पटन जाने के लिए पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं बचे थे। देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे। ज़्यादा नहीं बचा हुआ था अदा करने के लिए मेरे रास्ते में हैम्पटन के लिए। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, किसी न किसी तरह से पैसा जमा करने के खातिर आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइडवॉक। मैं लगातार सोता रहा या मैं लगातार सोया अंडर द साइडवॉक, फुटपाथ पर। When I had saved enough money, जब मैंने ज़्यादा पैसे जमा कर लिए, with which to reach Hampton, जिसके ज़रिए से मैं हैम्पटन पहुँचूँ, I thanked, मैंने शुक्रिया अदा किया, the captain of the vessel, जहाज़ के कप्तान से, for his kindness, उसकी रहमदिली के लिए। And started again, और दोबारा शुरू हुआ मैं। Without any unusual occurrence, किसी भी गैर आदि वाक़ये के बगैर, I reached Hampton, मैं हैम्पटन पहुँचा। With a surplus of exactly 50 cents, 50 cents पैसों के बचे हुए रुपयों के साथ, with which to begin my education, जिसके ज़रिए से मैं अपनी तालीम शुरू करता हूँ। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. 3 मंजिला ईंटे की लंबी स्कूल के नज़ारे ने, स्कूल का नज़ारा, स्कूल का नज़ारा मेरे लिए लगा कि वो दी गई है इनाम, फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन, उन तमाम चीज़ों के खातिर जो मैंने झेला है, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस जगह को पहुँचने में। द साइड ऑफ इट, इसके नज़ारे ने, इसको नज़ारा लगा, टू गिव मी न्यू लाइफ, की मुझे एक नई ज़िंदगी देगी। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सका, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इदारे के कैंपस में पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पेश किया, बिफोर द हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास के काम के लिए। Having been so long without proper food, एक लंबे समय तक अच्छा खाने और गुस्ल और कपड़े के ना बदलने की वजह से, I did not of course make a very favorable impression, मैं एक अच्छा तासुर नहीं छोड़ सका अपन हर उसके ऊपर। I could see at once, मैं उसी वक़्त देख सकता था, that there were doubts, कि शक हैं उसके दिमाग में, in her mind, that the wisdom of admitting me as a student, मैंने उसी समय देखा कि उनके दिमाग में शकूक हैं मेरे एडमिशन लेने में एज अ स्टूडेंट के। फॉर सम टाइम, चंद समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, उन्होंने इनकार नहीं किया मुझे एडमिशन लेने में। नाइदर डिड शी डिसाइडेड इन माई फेवर, ना ही उन्होंने मेरे फेवर में कोई फ़ैसला लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उनके पास खड़ा रहा, एंड टू इम्प्रेस हर, और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, इन ऑल द वेज आई कुड विथ माई वर्थनेस, उन तमाम तरीक़ों के ज़रिए से जो मैं कर सकता था अपनी काबिलियत से। इन द मेन टाइम, उसी समय, आई सा हर, मैंने उसे देखा, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, कि वो दूसरे तालिब इल्मों का एडमिशन ले रही हैं। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इस चीज़ ने मज़ीद
मेरे बेचैनी में इजाफा किया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ अपने दिल में। एंड आई कुड डू एज वेल एज दे, और मैं भी कर सकता था जैसे वो कर रहे थे। इफ़ आई कुड ओनली गेट, अगर मैं एक मौका हासिल कर लेता, टू शो, दिखाने के लिए जो मेरे अंदर था, व्हाट वाज इन मी, जो मेरे अंदर था। आफ्टर सम आवर्स, चंद घंटों के बाद, आफ्टर सम आवर हैड पास, चंद घंटा बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मेरे से कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड स्वीपिंग, मुत्तसिल वाला रीडिंग रूम जो है झाड़ू की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और झाड़ू लो।